हाय हेलो वेलकम एवरीवन। ये एक लेटेस्ट केस में से एक केस हमने लिया है, विदर्भा इंडस्ट्रीज वर्सेस एक्सेस। बहुत ही अच्छा केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था, एक नया लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या हुआ इस केस में, लेट्स अंडरस्टैंड वन आफ्टर द अदर थिंग। वेल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट इन द रीसेंट डिसीजन इन द केस ऑफ विदर्भा इंडस्ट्रीज वर्सेस एक्सिस बैंक has in effect held that it is not mandatory for adjudicating authority to initiate CIRP even on satisfaction of financial debt and default. ये अपने आप में ही लैंडमार्क हो गया कि आपको just because there is a financial debt and default आप फिर भी CIRP admit करें ऐसा जरूरी नहीं है. An NCLT can exercise its discretion in deciding whether or not to initiate CIRP after taking into account all the relevant facts and circumstances, including the overall financial health and viability of corporate debtor. It was just wow. मतलब आप corporate debtor का case ऐसे डिसाइड नहीं करोगे कि जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल डेट और डिफॉल्ट है तो एडमिट करो. क्या ये केस रिकवरी का है? रिकवरी का केस होने का मतलब है कि अगर फाइनेंशियल डेट पे करने के लिए कॉर्पोरेट डेटर के पास फंड्स हैं तो इसका मतलब ये केस रिकवरी का. अगर ये आईबीसी का केस है तो इसका मतलब फाइनेंशियल डेट को इंसॉल्वेंसी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, तब ये आईबीसी का केस था. सो दिस वाज अ लैंडमार्क डिसीजन. तो हुआ क्या था? Vidharbha Industries Power Limited corporate debtor is power generating company having set up a coal-fired thermal power plant with an aggregate capacity of 600 megawatts के आसपास. And in the terms of Electricity Act and the rules and regulations made thereunder, the company is regulated by State Electricity Commission. The tariff chargeable by the generation of the company is determined by the State Regulatory Authority. तो ये State Regulatory Authority के अंदर आ रही. अब हुआ क्या था कि टैरिफ्स का झगड़ा शुरू हुआ. The corporate debtor filed an application before the Maharashtra Regulatory Commission for determination of tariff. And MERC disposed of the case by disallowing the substantial portion of fuel cost claimed by the corporate debtor. So MERC ने वो relief नहीं दी जो उनको चाहिए थी. Being aggrieved by the order of MERC, corporate debtor they filed an application before the Appellate Tribunal, Appel के सामने. लेकिन Appel ने क्या किया? Appel allowed the appeal, and the corporate debtor claimed a sum of 1,730 crores due from it under the order. तो वो MERC से उन्होंने claim किया. However, MERC filed a Supreme Court appeal which is pending. Meanwhile, क्या हुआ? Axis Bank and financial creditor of the corporate debtor they filed an application under Section 7 of IBC, initiating against the corporate debtor for 553 crores. And the corporate debtor filed an application before NCLT seeking to stay the proceedings as long as the appeal is against the order of appeal is pending. The corporate debtor contended it is temporarily short of funds and will be clearing all the outstanding dues. तो इसका मतलब कंपनी बोल रही थी कि हमारे पास उतना फंड्स है, मैं हम सारा पेमेंट कर देंगे, हमारा सिर्फ हमको थोड़ा सा पैसा अभी रिकवरी करना है. NCLT ने क्या किया? NCLT held that an application which is filed under Section 7 of IBC must necessarily be admitted if the debt existed and the corporate debtor was in default of payment. ये एक स्टैंडर्ड व्यू हर केस में लिया जाने लग गया था कि applications should be admitted in this case. लेकिन when these two aspects are satisfied, it would be mandatory for adjudicating authority, that is NCLT, to initiate CIRP. ये NCLT का view था. ये dispute between the corporate debtor and MERC was viewed by NCLT as extraneous matter. उनके हिसाब से ये dispute IBC के proceedings को affect नहीं करता है. लेकिन ये मैटर जब NCLT में पहुंचा, उन्होंने भी NCLT का डिसीजन अपील किया. मैटर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा था, द क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, whether section 7 subsection 5 clause A is mandatory or discretionary. In other words, whether the expression may is to be construed as shall having regard to the facts and circumstances. Okay, सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर बहुत ही अच्छे से दिया. उन्होंने कहा, there is no doubt that a corporate debtor who is in red should be resolved expeditiously following the timelines. यहाँ पे रेड होने का मतलब होता है जब एक कंपनी जिसके पास रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं होती तब उसको हम लोग बोलते हैं दे आर इन रेड, और उसका रिवर्स साइड होता है यू आर इन ब्लैक. ब्लैक का मतलब आपके फाइनेंशियल अभी भी स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर व्हेन यू आर इन रेड, ओके, तब आपको आईबीसी फॉलो करना चाहिए. नो एक्सट्रीनियस मैटर शुड कम इनटू द वे. ये भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है, however the viability and overall financial debt or health of the corporate debtor are not extraneous. सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनसीएलटी का जो व्यू है वो अपने आप में सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन आवर व्यू Appellate Authority
erred in holding that adjudicating authority NCLT was only required to see whether there has been a debt and a corporate debtor has defaulted in making the payment, and these two aspects if satisfied would trigger CIRP. Supreme Court ने बोला हम लोग एकदम वो पैटर्न बाय लॉ नहीं चल सकते, हमें circumstances को देख के चलना है. Just because there is a debt, just because there is a default, you cannot be admitting each and every case when the company has repayment capacity. The existence of a financial debt and a default in payment thereof only give financial creditor the right to apply for CIRP. तो एक debt existence में होना चाहिए तब CIRP किया जा सकता है. And the adjudicating authority was required to apply its mind to the relevant factors and to that feasibility and against any electricity generating company operated under the statutory control. The impact of MERC appeal pending in the court and appeal referred above and all financial health and viability of the corporate debtor. इसका मतलब NCLT को ये थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था. They have to apply mind now onwards. That is NCLT हर केस को ऐसे admit नहीं कर सकती. They have to apply कि एक statutory corporation का appointing का demand कर रहे हो जिसकी MERC की अपील भी pending है, जिसकी financial viability अभी तक ऐसी नहीं है कि जो वो insolvency की तरफ जाए. Okay, and the Supreme Court adopted the literal interpretation of the expression may instead of purposive interpretation of may construing as shall. Interpretation of statutes के हिसाब से हमेशा law literal interpretation के हिसाब से ही चलता है. The court reiterated that well-settled principle that the purposive interpretation can only be restored when the plain words of the statutes are ambiguous or if construed literally. The provision would nullify the object of the statute or otherwise lead to absurd. Supreme Court ने clear किया कि section 7 subsection 5 clause A में जो may word लिखा है उसको हमें बिल्कुल उसके literal interpretation में लेना चाहिए. And the court observed there is no cogent reason to depart from the rule of literal interpretations. Okay. Innovative Industries का decision भी यहाँ पे cite किया गया था. Supreme Court in this case, Innovative versus ICISI, ये हमने discuss भी किया हुआ है. With the question whether notification under the state enactment suspending the debt of the corporate debtor will stand in the way, the Supreme Court ने वो भी clear किया कि on the other hand, as we have seen in the case of corporate debtor who commits a default of a financial debt, the adjudicating authority has merely seen the records of the information utility or the evidences which is produced by FC to satisfy the default as a debt. उन्होंने बताया कि Innovative Industries में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि आपको merely आयु का रिकॉर्ड या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का डिफॉल्ट देखना चाहिए. Okay, it is of no matter that the debt is disputed so long as debt is due and payable, unless interdicted by some law or has not yet become due in the sense that it is payable in some future date. It is only when it is proved that to the satisfaction of the adjudicating authority that the adjudicating authority may reject the application, not otherwise. इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनोवेटिव इंडस्ट्रीज में क्लियरली बोला था कि अगर एक डिस्प्यूट है और वो डिफॉल्ट साबित होता है तो उस डिस्प्यूट्स के एप्लीकेशन पे CIRP एडमिट करना चाहिए था. और जब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि वहां पर CIRP लाया जा सकता है, तभी लाया जाएगा, तभी एप्लीकेशन एडमिट किया जाएगा. It is clear that Supreme Court has categorically held that NCLT cannot reject the application for initiation of CIRP unless there is either satisfied that the debt does not exist or if the debt is not due. In other words, when the twin condition of existence of debt and default are established, it is mandatory for NCLT to initiate CIRP. ये था Innovative Industries का judgment. अब Supreme Court अपने इसी judgment से थोड़ा आगे जा चुका है. Supreme Court was aware of its earlier decision in Innovative Industry, as certain proportions of the decision have been referred to in this. However, specific finding in the earlier decision does not form the part of this discussions also. Supreme Court has distinguished its earlier decision of Swiss Ribbons versus Union of India also, which was placed before it to canvass the mandatory requirements of सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्विस रिबन्स के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था, उसको भी कंसीडर करके थोड़ा डाइवर्जन लिया है. The decision of Swiss Ribbons was distinguished on the ground that judgment is a precedent for the question of law. That is, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आज के बाद स्विस रिबन्स का जजमेंट एक तरह के प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा. और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था कि every judgment is a precedent in the power of law.
लेकिन अपने ही इस डिसीजन को ओवरराइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक नया स्टैंड ले रहा है. And the decision in the Swiss Ribbons was rendered in the context of a challenge to the wires of the IBC, and it did not consider the question of Section 7, subsection 5, clause A is mandatory or discretionary. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्विस रिबन्स का केस इस केस में वैलिड नहीं. तो स्विस रिबन्स के केस में हमारा मेन कंटेक्स्ट यही था कि जो स्विस रिबन्स के केस में यही कंटेक्स्ट था कि वहां पे आईबीसी को चैलेंज किया गया था, लेकिन जबकि इस केस के अंदर हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए को चैलेंज किया गया है. नाउ इस केस में क्या अलग किया गया? इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें अलग की, द कैश फ्लो टेस्ट विद द बैलेंस शीट टेस्ट. देखो, लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 ऑफ सुप्रीम कोर्ट held that NCLT has the discretion to reject the insolvency application even after satisfaction of the twin condition. क्यों? क्या? See, the court has further held that using the discretion of the NCLT has to examine the expediency of initiation of CIRP, taking into account the financial health and the viability. मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी कितनी स्टेबल कंडीशन पे है और क्या वो रीपेमेंट कैपेसिटी रखती है कि. सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ tasked the NCLT with the assessment of overall financial health and viability, which is nothing but determination of insolvency. इसका मतलब अब आप CIRP फाइल एडमिट करने से पहले ये इंश्योर करो कि CIRP एडमिट करने लायक है कि नहीं. उसके लिए आप कंपनी के कैश फ्लो और बैलेंस शीट्स को भी देखो, जो आज से पहले NCLT हमेशा अवॉइड करती थी. उसका क्लियर रीजन यही था कि वो COC में देखा जाएगा. Now, insolvency regimes across the globe have largely adopted the cash flow test or the balance sheet test or sometimes a combination. जिसका मतलब क्या रहता है? Well, इसका मतलब ये रहता है, a cash flow test is where the insolvency of the company is determined on the basis of its ability to pay its debt, and when it falls due. On any default in the payment of due, it will be deemed to be insolvent. So ये point पे आता है कि क्या कंपनी के पास repayment capacity है या नहीं है. इस बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि whether the company will be sustaining or not. तो ये आता है कैश फ्लो टेस्ट. ओके, तो इसका मतलब ग्लोबली यही प्रैक्टिस चलती है कि अगर कंपनी के पास रीपेमेंट कैपेसिटी है तो फिर उसको इंसॉल्वेंसी में धकेला नहीं जाएगा. जबकि बैलेंस शीट टेस्ट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड to determine if the assets of the company are sufficient to pay the liability. It is very much possible for the company to be solvent as per the balance sheet, but insolvent as per the cash flow. कभी कभी होता है कंपनी के पास पैसे देने के लिए कम है, लेकिन उसके एसेट्स उसके लायबिलिटी देने के लिए सही है, काफी है. तो इन दैट केस CIRP इनिशिएट करना सही नहीं होगा. With the introduction of IBC in India, the Parliament has chosen to adopt a cash flow test. कि क्या कंपनी अपने डेट्स रीपे करने के लिए काबिल है. Some other jurisdictions like UK have incorporated cash flow and balance sheet tests. Satisfaction of one of the tests results in insolvency. But there is no doubt that the cash flow test has, at least in Indian context, proved to be a tool which has brought some financial discipline. In the process, even inviting criticism on IBC used as a recovery tool. So कई बार ये IBC के ऊपर चार्ज भी डाला जाता है कि IBC रिकवरी, लेकिन उसका बेसिस था कैश फ्लो टेस्ट, ये डिटरमाइन करने का कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है टू पे ऑफ द लायबिलिटी और नॉट. Apart from the existing task of determining the existing of debt and default, cash flow test and of default, the Supreme Court has now additionally tasked NCLT with examining the financial health. That is, अब NCLT को ये देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी के पास इतने पैसे, इतना फाइनेंशियल वायबिलिटी है कि वो रीपे कर पाएगी सारी चीजों को. इसका मतलब अब सिर्फ कैश फ्लो टेस्ट से ही काम नहीं चलेगा. So now in this effect is the balance sheet testing. The test has to be introduced. The effect of the Supreme Court decision is that NCLT can initiate CIRP only on both cash flow and balance sheet test is satisfied. और ये था एक landmark statement. It is pertinent to note that Supreme Court, even in Vidharbha industry, has maintained that operational creditors can file an application of CIRP if the conditions are satisfied, that is, existence of an undisputed debt and a default, and NCLT has to mandatorily initiate. यानी OC के केसेस में अभी भी सुप्रीम कोर्ट कैश फ्लो टेस्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन CIRP बाय सेक्शन 7 फाइनेंशियल डेट क्रेडिटर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजें फॉलो करने के लिए बोल दी. So there cannot be inconsistency in the test for determination of insolvency, FCs and OC के केस में, and the approach has to be unified. But one cannot lose the sight of the fact that IBC is not a recovery tool. And after the initiation of the process, okay, one can
lose the sight of the fact that IBC is not a recovery tool. Further, after initiation of insolvency process is pending in writ. तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छे जजमेंट में से एक जजमेंट आ चुका है कि आईबीसी का प्रोसेस किस तरीके से यूज होगा. And the creditor who initiated insolvency will have no distinct role to play in the resolution process. The debts of all the creditors are taken into consideration in the resolution process as a whole, and no individual creditor will be independently benefit from the resolution process. So ultimate decisions अपने आप में clear कर दिया गया है कि creditor अपने आप में एक डिस्टिंक्ट रोल कोई प्ले नहीं करेगा. अब आईबीसी के अंदर एनसीएलटी को ये देखना पड़ेगा कि क्रेडिटर का कंसिडरेशन के साथ साथ क्या कंपनी की वायबिलिटी भी है, क्या रेजोल्यूशन प्रोसेस सिर्फ एक क्रेडिटर को बेनिफिट कर रहा है या ओवरऑल को. एंड एज अ पॉलिसी द पार्लियामेंट हैज चोजन टू अडॉप्ट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड नाउ आफ्टर दिस डिसीजन Section 7, subsection 5, clause A, the position has changed, and it is likely to be a complex exercise as no new guidelines is there. So no new lease life for the defaulting corporate debtor will actually ये कह सकते हैं कि a corporate debtor is facing an application in the section 7 for initiation by FC was always on the back foot, because FC application मतलब एक बार financial creditors ने application डाल दी तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था. And unlike it is faced with the application section 9 जहाँ पे आप एक pre-existing dispute raise कर सकते थे, FC के सामने कोई pre-existing dispute का chance नहीं था. But as long as the existence of financial debt and default is established, the NCLT has no option but to initiate CIRP held by Supreme Court Innovative Industries. And the decision in the Vidharbha case seems to have broadened the range of possible defenses that corporate debtor may put to establish that there are good reasons not to admit the petition. Yes, अब ये corporate debtor कर सकता है और ये establish कर सकता है. And the Supreme Court has also warned that NCLT is not to be used as a discretionary power arbitrarily or capriciously. However, Supreme Court has stopped with warning and has not laid down any guidance on where the powers can be used or not. The Supreme Court ने clear warning दे दी है कि NCLT को अपनी पास सोच समझ के यूज करनी पड़ेगी, ना कि जब जी चाहा जैसे जी चाहा. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि वार्निंग के तौर पे that as such NCLT को ध्यान रखना पड़ेगा, बट as such कोई गाइडलाइंस लेड डाउन नहीं की है. तो इससे कुछ क्वेश्चंस इस समय ओपन रह गए हैं कि हाउ विल एनसीएलटी डिटरमाइन द फाइनेंशियल हेल्थ एंड वायबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. शुड एनसीएलटी ऑर्डर फॉर एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू डिटरमाइन, या आईपी का रोल अब और बढ़ेगा? And if so, in such determination, should the insolvency professional go by the books of the accounts of the corporate debtor? क्या अब ये करना पड़ेगा कि books of accounts check करे? And before determining the financial viability, should NCLT order for forensic audit of the corporate debtor, given the facts of the past experience to show that in some cases, liabilities are not even recorded or reported? And should the contingent or the prospective liability of the company be considered in assessing the viability of the corporate debtor? ये कुछ सवाल आज important बन गए. And perhaps it is for these practical difficulties of adopting the balance sheet test, the Parliament, though fitted only to have a cash flow, it is not that the balance sheet test was never envisaged and led to IBC. Bankruptcy Reforms Interim Report 2015 laid that the balance sheet insolvency and commercial insolvency should be identified as a separate grounds in initiating the company's inability to pay. ये point आया था, ये हमारे Bankruptcy Law Reforms Committee के recommendations of 2015 में आया था कि balance sheet test should be there to avoid the conflict and conclusion of statutory demands. Okay, and ये point था. And however, in its final report of 2015, Bankruptcy Law Reform rejected the balance sheet test after observing that balance sheet is vulnerable to accounting standards and that India suffers from a low and below average of accounting quality. ये देखते हुए उन्होंने बैलेंस शीट टेस्ट को अवॉइड करने की बात की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया? इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड that any amendment to the statute, more so economic legislation, be made only on the basis of empirical evidences. इसका मतलब ध्यान रखना कि अब आगे आने वाली केसेस में एविडेंसेस उतने श्योर होने चाहिए कि यहाँ पे there is corporate debtor के खिलाफ एप्लीकेशन लिया जा सकता है. And the introduction of IBC and the subsequent amendments made to it have all been made after the deliberations of the Bankruptcy Law Reforms Committee and other insolvency tests from time to time. And the Parliament, on the recommendation of these committees, have taken an informed decision to adopt cash flow test and has kept the balance sheet test out of the ambit of IBC. Okay.
So just that on the literal interpretation, our Supreme Court ने Section 7, subsection 5, clause C has added that balance sheet test to be taken. Now, though the expression may, which is used in this statute, is very clear that the balance sheet test was never envisaged by the Parliament, but in fact, the Parliament has clearly chosen a cash flow test and rejected ये भी fact है. तो इसका मतलब इस judgment का असर कहाँ तक होगा और कितना होगा ये देखने लायक होगा. And it would be interesting to see how NCLT used the discretionary power. What is certain that discretionary power of NCLT is going to ensure a long drawn litigation जो आने वाले time में हम और भी देखेंगे. मतलब IBC will be looking into further litigations, and the NCLT and NCLT are already burdened with heavy caseloads, and this new development will further clog the NCLTs. And given the fact that the decision of Supreme Court is the law of the land and amendments in IBC are likely to be made where may should be substituted with shall, the expression should be added to restore the cash flow test as the only test. अगर Parliament ये change लेके आती है तो चीजें वापस से अपनी पुरानी जगह रिस्टोर हो जाएगी. नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक मैंडेट की तरह पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाए. ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल योर कोऑपरेशन. एंड यस, ये केस बहुत ही बड़ा लैंडमार्क केस बन चुका है. ओके, थैंक यू.